The given diagram shows two different processes 1 and 2 occurring in the sexually reproducing animals. The statement that is correct about the process 1 is that it 24 number of chromosomes in each cell, process 1, 12 number of chromosomes in each cell after the completion of process 1, fusion of cells, process 2, 24 number of chromosomes. As you know, the sexual reproduction is based on the formation and the fusion of male and female gametes. The formation of gametes is called gametogenesis. In this process, diploid 2 and gamete mother cell undergo meiosis and form haploid gametes. The male and female gametes are produced in specialized organs called gonads. हमें 24 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स नजर आ रहे हैं. आफ्टर प्रोसेस 1 वो नंबर रिड्यूस्ड हो रहे हैं या हाफ हो रहे हैं इंटू 12. तो मीन्स ये कौन सा प्रोसेस है? गैमेटोजेनेसिस हम कह सकते हैं या हम मियोसिस कह सकते हैं. दोनों में ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? हाफ हो जाते हैं. गैमेटोजेनेसिस में ही मियोसिस होता है और गैमेटोजेनेसिस या मियोसिस कहाँ होता है? जर्म सेल्स में या स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स में होता है जैसे कि गोनाड्स. देयरफॉर जो हमारा करेक्ट आंसर है गिवन ऑप्शन में से वो है ऑप्शन ए, दैट इज टेक्स प्लेस इन गोनाड्स. मीन्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस DNA replicates once but cell division occurs twice. This results in the formation of gametes consisting of 1. A single copy of each homologous chromosome. 2. Non-homologous chromosomes with their sister chromatids. 3. A pair of homologous chromosomes with its sister chromatids. During gametogenesis, gametes form. मियोसिस होता है. नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हो जाते हैं? हाफ हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं. इसलिए जो इन तीनों में से करेक्ट स्टेटमेंट है वो है स्टेटमेंट 1. दैट्स वाई ऑप्शन ए 1 ओनली इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन 2 और 3 में सिस्टर क्रोमेटिड्स लिखे हुए हैं और ऑप्शन 3 में अपियर लिखा हुआ है. जिस वजह से ऑप्शन 2 और 3 इनकरेक्ट है. मीन्स पॉइंट 2 और 3 इनकरेक्ट है और पॉइंट 1 करेक्ट है. तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? ए. Next question. Consider the given statement. In humans, somatic cells other than reproductive cells are diploid to N. The correct interpretation of this statement is that somatic cells, given options में से जो correct answer है वो है option D, that is have pairs of homologous chromosomes. Means option D is the correct answer. Contain 2 chromosomes incorrect है. In humans, somatic cells have 46 chromosomes or 23 pairs. Undergo meiotic cell division भी incorrect है. Reproductive cells, germ cells undergo meiotic cell division. Somatic cells में mitosis होता है. Can pass mutations through generations भी incorrect है. जो germ cells में mutations होते हैं वो pass होते हैं, somatic cells में नहीं. Means option D is the correct answer. The structural feature which correctly identifies a sensory neuron is the presence of. Given options में से जो correct answer है वो है option D, that is a cell body in the center of the neuron. Option D is the correct answer. As you know, sensory neurons conduct sensory information nerve impulse from receptors towards the central nervous system. Sensory neurons have one dendrite and one axon. Means option D is the correct answer. Next question. After fasting for 12 hours, a person's blood glucose level is reported to be abnormally high. In this medical condition, the gland which is associated with the elevated blood glucose level is. गिवन ऑप्शंस में से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज पैंक्रियाज. मीन्स ऑप्शन बी पैंक्रियाज इज द करेक्ट आंसर. एज यू नो, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हार्मोन दैट द पैंक्रियाज
produces is insulin. Insulin is released by the beta cells in the islets of Langerhans in response to food. Its role is to lower glucose levels in the bloodstream and promote the storage of glucose. If a person's pancreas does not make normal quantity of insulin, the blood glucose concentration rises. Therefore, the correct answer is option B, pancreas. Means option B is the correct answer. Next question. The given image depicts the fight or flight situation. Fight, flight, person Y. The gland that will be activated in the person Y is given options में से जो correct answer है वो है option C, that is adrenal gland. As you know, adrenal medulla secretes a hormone called epinephrine or adrenaline in response to stress. It prepares our body to overcome emergency situations like fight or flight. That's why option C, adrenal gland, is the correct answer. Next question. The blood report of a patient with acromegaly will reveal the high level of given options में से जो correct answer है वो है option D, that is somatotrophin. Means option D is the correct answer. As you know, anterior lobe of pituitary gland produces many hormones. One of its important hormone is somatotrophin, growth hormone. It promotes the growth of body. If somatotrophin is excessively produced after growing age, internal organs and body extremities alone grow large. This condition is known as acromegaly. Means option D, somatotrophin, is the correct answer. Next question. The point of exit for the optic nerve and blood vessels from the eye is called blind spot. This is because it is devoid of given options में से जो correct answer है वो है option C, that is photosensitive cells. Means option C is the correct answer. As you know, blind spot is a point at which the optic nerve leaves the eye. It contains no rods or cones, so an image formed at this point is not sent to the brain. That's why option C, photosensitive cells, is the correct answer. Next question. Read the given statement. In a human body, the anterior pituitary gland controls activities of the other hormone secreting glands. Which of the following examples correctly relates to the given statement? Estrogen stimulates the release of eggs from the ovary. Incorrect है. एस्ट्रोजन को एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट नहीं करता, ओवरी सिक्रीट्स एस्ट्रोजन. वेसोप्रेसिन स्टिमुलेट्स द वाटर रीअब्सॉर्प्शन बाय किडनीज भी इनकरेक्ट है. वेसोप्रेसिन को एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट नहीं करता, पोस्टीरियर लूप ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट्स वेसोप्रेसिन. Somatotropin hormone stimulates adrenal glands to release testosterone भी incorrect है. Somatotropin promotes growth of the body. तो जो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, दैट इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक्टिवेट्स द थायराइड ग्लैंड टू सिक्रीट थायरोक्सिन. Next question. The option that correctly matches the gland with its location in the human body is given options में से जो correct answer है वो है option B, that is pituitary gland, brain. Means option B is the correct answer. Adrenal gland, liver, incorrect. Adrenal glands are situated above kidneys. Pancreas, stomach भी incorrect है. Pancreas is located behind stomach. Thyroid gland, abdomen भी incorrect है. Thyroid gland is present in neck region below larynx. That's why option B, gland, pituitary gland, location brain, is the correct answer. Next question. The given diagram represents the cross-sectional view of spinal cord.
The labeled part which contains the cell bodies of motor neurons is receptor, sensory neuron, interneuron, motor neuron, effector. मोटर न्यूरॉन की सेल बॉडी हमें कहाँ नजर आ रही है? यहाँ पर। और ये कौन से रीजन में? बी में। दैट्स व्हाई ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द ह्यूमन ईयर द eustachian tube does not amplify the sound waves. Means option A is the correct answer. eustachian tube एम्पलीफाई नहीं करती है साउंड वेव्स को, बाकी सारे जो फंक्शंस नीचे लिखे हुए वो eustachian tube के, दैट इज drain secretions from the middle ear, protect the middle ear from bacteria and viruses, keep air pressure equal on both sides of the eardrum. Means option A is the correct answer. Next question. The table shows two different states of the pupil R and S in a human eye. The state of pupil R shows that a person, as you know, pupil constricts in bright light and pupil dilates in dim light. यहाँ pupil क्या है? Constrict है और यहाँ pupil क्या है? Dilate है। अगर pupil dilate मीन्स डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं और हम डार्क रूम में एंटर हैं, बट हमसे क्या पूछा गया है? आर के बारे में। तो आर के लिए जो स्टेटमेंट करेक्ट है वो 1 है, दैट इज इट इज फोकसिंग अ क्लोज ऑब्जेक्ट। और फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है, दैट इज हैज इंटर्ड इनटू अ ब्राइट रूम, जो करेक्टली ऑप्शन बी रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट्स व्हाई ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 एस के लिए करेक्ट है। In flowering plants, the set of structures formed during double fertilization is zygote and endosperm nucleus. Means option D is the correct answer. As you know, in double fertilization, two sperms enter the female gametophyte. One sperm fuses with egg and forms a diploid zygote. The other sperm fuses with diploid fusion nucleus and forms a triploid nucleus called endosperm nucleus. Since the process of fertilization involves two fusions, it is called double fertilization. Means option D, zygote and endosperm nucleus is the correct answer. Next question. Consider the given statements. 1. It is formed by the stigma. 2. It produces an enzyme to dissolve the tissue of style. 3. It enters into the ovary through micropyle. With reference to the pollen tube of a flower, the true statement or statements is /R. Statement 1. It is formed by the stigma. Incorrect. The tube nucleus of pollen grain constructs a pollen tube. Statement 2 or statement 3 correct है, that's why option D is the correct answer. That is, it produces an enzyme to dissolve the tissue of style. It enters into the ovary through micropyle. Means option D is the correct answer. Next question. Offspring produced by asexual reproduction are called clones. This is because they are गिवन ऑप्शंस में से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज जीनोटिपिकली एंड फिनोटिपिकली सिमिलर टू देयर पेरेंट्स. मींस ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. एज यू नो, asexual reproduction means simple cell division that produces an exact duplicate of an organism. Asexual reproduction does not involve the fusion of gametes. There are many types of asexual reproduction, all producing individuals that are genetically identical to each other and to the parent. That's why option B is the correct answer. Next question. The animal in which external fertilization takes place is, given options में से जो correct answer है वो है option B, frog, जो amphibian है. Means option B, frog is the correct answer. Hen is aves, rabbit and mouse are
mammals. As you know, in external fertilization, eggs are fertilized outside the body. External fertilization occurs mostly in aquatic environment. External fertilization occurs in many invertebrates and the first two groups of vertebrates, that is fishes and amphibians. That's why option B, frog, is the correct answer. Next question. The given diagram represents one of the stages in life cycle of flowering plants. The type of cell division or divisions that cells X and Y undergo is slash R. As you know, haploid megaspore is produced through meiosis by megaspore mother cell. Megaspore germinates into the female gametophyte generation. During it, megaspore undergoes mitosis and produces an egg cell and some associated structures. Egg cell and associated structures are the female gametophyte generation of plant. मेगास्पोर मदर सेल डिप्लॉयड है जो प्रोड्यूस कर रहा है मेगास्पोर जो हैप्लॉयड है मीन्स मियोसिस शॉर्टलिस्ट हो जाता और वाई में माइटोसिस हो रहा है दैट्स वाई ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर एक्स मियोसिस वाई माइटोसिस मीन्स ऑप्शन डी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन कंसिडर द गिवन डायग्राम डेफोडिल प्लांट पी प्लांट pollens. In this case, fertilization will not take place because डेफोडिल प्लांट और पी प्लांट डिफरेंट स्पीशीज है इसलिए इनमें फर्टिलाइजेशन नहीं होगी इसलिए जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए दैट इज बोथ प्लांट्स आर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज मीन्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर The given diagram represents a type of joint. The magnified image further specifies its parts along with the condition of structure X when injured. The injury to structure X will result in the मैग्नीफाइड इमेज में हमें फीमर और टिबिया नज़र आ रहे हैं और स्ट्रक्चर एक्स इंजरी टू द स्ट्रक्चर एक्स इज ligament. As you know, ligaments are strong but flexible bands and join one bone to another at joints. They prevent dislocation of bones at joints. Therefore, given options में से जो correct answer है वो है option C, that is instability of adjacent bones. Means option C is the correct answer. Next question. All of the given images of different types of joints contain articular cartilage except, as you know, articular cartilage is the smooth white tissue that covers the ends of bones where they come together to form joints. Healthy cartilage in our joints make it easier to move. It allows the bones to glide over each other with little friction. As you know, in option B, skull is shown, which consists of immovable joints. तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है ऑप्शन बी बाकी सारे ऑप्शंस में जो हमें जॉइंट्स नज़र आ रहे हैं वहाँ आर्टिकुलर कार्टिलेज प्रेजेंट होगी एक्सेप्ट ऑप्शन बी जहाँ पे हमें इमूवेबल जॉइंट्स नज़र आ रहे मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन द प्राइमरी रीजन फॉर द swelling of joints in osteoarthritis is the, as you know, osteoarthritis is due to degeneration in the cartilage present at joints or due to decreased lubricant production at joints. In this arthritis, fusion of the bones at joint may occur and joints may become totally immovable. इसीलिए गिवन ऑप्शन में से जो करेक्ट आंसर है जो प्राइमरी रीजन है वो है ऑप्शन डी दैट इज rubbing of bones against each other means option D is the correct answer.
नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ द ह्यूमन skeleton that maintains mineral balance in the body is, as you know, bones serve as store for calcium, phosphorus, sodium and potassium. हमसे मेंटेन्स मिनरल बैलेंस के बारे में पूछा है, इसीलिए गिवन ऑप्शंस में से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज स्टोरेज। बाकी सब भी स्केलेटन के फंक्शन है, बट हमारा कीवर्ड क्या था, मेंटेन्स मिनरल बैलेंस, इसलिए जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज स्टोरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गिवन इमेज shows an experimental setup to determine tropism in plants. The type or types of tropism illustrated in this experiment is /R. 1. Phototropism, 2. Hydrotropism, 3. Geotropism. Pea seedling, water, porous port, sand. Phototropism is the movement of plant parts in response to stimulus of light, जो हमें नजर नहीं आ रहा। Hydrotropism is the movement of plant parts in response to stimulus of water, जो हमें नजर आ रहा है। Geotropism is the movement of plant parts in response to gravity, जो भी हमें नजर आ रही है। मीन्स हाइड्रोट्रोपिज्म और जियोट्रोपिज्म हमें नजर आ रहा है, जो ऑप्शन डी रिप्रेजेंट करे। दैट्स वाई ऑप्शन डी 2 and 3 is the correct answer. Next question, the given pedigree shows cross between red and white flowers. The allele capital R for red flower is completely dominant over the allele for white flower small r. Which of the following options correctly identifies Y and Z? White flower color recessive है, तो इसके लिए हम RR यूज करेंगे, क्योंकि रिसेसिव हमेशा होमोजाइगस होता है। रेड फ्लावर कलर डोमिनेंट है, तो दो कंडीशंस पॉसिबल है, या तो कैपिटल आर हो या कैपिटल आर या स्मॉल आर। अगर कैपिटल आर और स्मॉल आर जीनोटाइप होता पेरेंट का, तो हमें वाइट ऑफस्प्रिंग्स मिलने चाहिए F1 जनरेशन में। यहाँ पे हमें 3 रेड नजर आ रहे हैं, मीन्स पेरेंट का जो जीनोटाइप है वो हीट्रोजाइगस नहीं है, होमोजाइगस है। मीन्स बी और डी इनकरेक्ट है, ए और सी शॉर्टलिस्ट हो जाते। जब हम होमोजाइगस रेड और होमोजाइगस वाइट को आपस में क्रॉस करवा रहे, तो हमें चारों ऑफस्प्रिंग क्या मिल रहे, रेड मिल रहे, इसलिए जेड भी क्या होगा, रेड होगा। हमारे दोनों करेक्ट आंसर कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन ए में। दैट्स वाई ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज जीनोटाइप ऑफ रेड, पेरेंट फ्लावर Y is RR, missing phenotype Z is red, means option A is the correct answer. Next question, the cell of human body which will cause changes in the phenotype of the offspring if it is genetically modified is, somatic cells के अंदर जो भी changes आती हैं वो offspring में पास नहीं होती है। ऑप्शन बी सी डी somatic cells को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कॉन्ड्रियोसाइट, रेड ब्लड सेल और पैंक्रियाटिक सेल, इसलिए तीनों इनकरेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए जर्म सेल गैमेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट्स व्हाई ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ओवम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन डायग्राम द लेबल्ड पार्ट 1, 2 and 3 रिप्रेजेंट, 1 रिप्रेजेंट कर रहा है क्रोमोसोम को, 2 रिप्रेजेंट कर रहा है क्रोमेटिन को और 3 रिप्रेजेंट कर रहा है डीएनए को। हमारे तीनों करेक्ट आंसर ऑप्शन सी में है, दैट्स व्हाई ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महक wrote the given statement that is incorrect. The phenotype of a homozygote is always dominant. The correction for the given statement is that the homozygote हमेशा डोमिनेंट हो जरूरी नहीं है, रिसेसिव भी हो सकता है। होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रिसेसिव, heterozygous dominant. स्टेटमेंट ए कह रहा है रिसेसिव phenotypes can have heterozygous genotypes, इनकरेक्ट है। रिसेसिव phenotype में होमोजाइगस जीनोटाइप होता है। ऑप्शन सी कह रहा है अपीयरेंस ऑफ द phenotype इज इंडिपेंडेंट ऑफ द जीनोटाइप, भी इनकरेक्ट है। phenotype डिपेंड करता है जीनोटाइप पे। ऑप्शन डी कह रहा है dominant allele can only be appear in the phenotype of heterozygote, ये भी इनकरेक्ट है।
डोमिनेंट एलील हेट्रोजाइगोट में भी अपीयर होता है और होमोजाइगोट में भी। तो इसलिए जो हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है वो ऑप्शन बी है, दैट इज होमोजाइगस जीनोटाइप कैन बी आइदर डोमिनेंट और रिसेसिव। मीन्स डोमिनेंट भी हो सकता है और रिसेसिव भी। दैट्स वाई ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ हैबिटेट there are two different populations of bugs, red bugs and green bugs. Birds and other animals prefer to eat the red bugs for their taste. Therefore, there are many green bugs and a few red bugs. The green bugs reproduce and make more green bugs, and eventually there is no more red bugs. The given scenario exemplifies गिवन ऑप्शन में से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज नेचुरल सिलेक्शन। As you know, natural selection is the process in which organisms with favorable variations survive and produce more offspring than less well adapted organisms. यहाँ पे फेवरेबल वेरिएशन क्या है? ग्रीन बग्स है, रेड बग्स का टेस्ट बहुत अच्छा है इसीलिए उनको ज़्यादा प्रेफर किया जा रहा है। इवेंचुअली उनकी तादाद खत्म हो गई। दैट्स वाई ग्रीन बग्स सर्वाइव। मीन्स ऑप्शन ए, नेचुरल सिलेक्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेरेंटल जीनोटाइप्स which can produce offspring with 50% A and 50% AB blood group is। हमें ऐसा आंसर शॉर्टलिस्ट करना है, मीन्स ऐसे पेरेंटल जीनोटाइप्स को शॉर्टलिस्ट करना है जिससे हमें 50% ब्लड ग्रुप ए मिले और 50% ब्लड ग्रुप ए बी। मैंने फर्स्ट ऑप्शन की क्रॉस को यहाँ शो किया। होपफुली आपको पनेट स्क्वायर बनाना आते हो। मैं यहाँ पे बनाना नहीं सिखा रही हूँ, डायरेक्ट मैंने बना दिए टाइम सेव करने के लिए। इस क्रॉस में हमें क्या नजर आ रहा है? चारों ब्लड ग्रुप्स नजर आ रहे हैं। मीन्स सब ब्लड ग्रुप 25% है। 25% ए बी, 25% ए, 25% बी और 25% ओ। मीन्स ए इज नॉट द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी का क्रॉस मैंने यहाँ शो किया है जिसमें हमें 50% ए बी तो मिल रहे बट 50% बी मिल रहे। हमें क्या चाहिए? ए ब्लड ग्रुप चाहिए 50%, जो करेक्टली ऑप्शन सी रिप्रेजेंट कर, जहाँ हमें 50% ए बी और 50% ब्लड ग्रुप ए मिल रहा है। दैट्स वाई ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी का क्रॉस मैंने यहाँ शो किया है। यहाँ हमें 100% ब्लड ग्रुप ए बी मिल रहा है, जबकि हमें क्या चाहिए? 50% ए और 50% ए बी, जो ऑप्शन सी रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट्स वाई ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ह्यूमंस the allele for brown eye color capital B is dominant over the allele for blue eye color small b. If two brown-eyed parents produce 25% of the offspring with blue eyes, then the genotype of parents would have been। हमें ऐसा क्रॉस आइडेंटिफाई करना है जिसमें हमें 25% ऑफस्प्रिंग का ब्लू आई कलर नजर आए। ब्लू आई कलर क्या है? रिसेसिव है। रिसेसिव कलर तभी अपीयर होते हैं जब दोनों पेरेंट के पास रिसेसिव एलील हो, जो ऑप्शन बी में हमें नजर आए। दैट्स वाई ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी के क्रॉस को मैंने यहाँ शो किया है। जब कैपिटल बी स्मॉल बी का क्रॉस होता है आपस में, तो हमें 25% ऑफस्प्रिंग का आई कलर ब्लू नजर आता है। होपफुली आपको पनेट स्क्वायर बनाना आता है। ये कैपिटल बी यहाँ से, 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 ये स्मॉल बी यहाँ से, ये स्मॉल बी यहाँ से, ये स्मॉल बी यहाँ से और ये स्मॉल बी यहाँ से। मीन्स जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है। ऑप्शन ए में जब हम आपस में क्रॉस करवाते कैपिटल बी को स्मॉल बी के साथ, तो हमें सारे ऑफस्प्रिंग ब्राउन मिल रहे हैं। ऑप्शन सी में जब हम कैपिटल बी स्मॉल बी को आपस में क्रॉस करवा रहे, तब भी हमें सारे ऑफस्प्रिंग क्या मिल रहे? ब्राउन मिल रहे। और मैंने ऑप्शन डी का शो नहीं किया, उसमें रिसेसिव एलील मौजूद नहीं है स्मॉल बी, इनके भी सारे ऑफस्प्रिंग क्या होंगे? ब्राउन होंगे। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, जिसके पास रिसेसिव एलील दोनों पेरेंट के पास मौजूद है और हमें 25% ऑफस्प्रिंग में
ब्लू आई कलर नजर आ रहा है. दैट्स वाई ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन पी प्लांट्स the allele for the pod color green capital G is dominant over the allele for the pod color yellow small g, and the pod shape inflated capital I is dominant over the a constricted one small I. A pea plant that is heterozygous dominant for the pod color and homozygous recessive for the pod shape is crossed with another pea plant that is homozygous recessive for the pod color and the heterozygous dominant for the pod shape. The percentage of offspring with green inflated pods would be pod color green dominant है. मीन्स हम कैपिटल जी यूज करेंगे होमोजाइगस डोमिनेंट ग्रीन के लिए. कैपिटल जी स्मॉल जी हम यूज करेंगे हीट्रोजाइगस डोमिनेंट ग्रीन के लिए. स्मॉल जी हम यूज करेंगे होमोजाइगस रिसेसिव येलो के लिए. पोर्ट शेप इन्फ्लेटेड डोमिनेंट है. मीन्स हम कैपिटल आई यूज करेंगे होमोजाइगस डोमिनेंट इनफ्लेटेड के लिए. कैपिटल आई स्मॉल आई हम यूज करेंगे हीट्रोजाइगस डोमिनेंट इनफ्लेटेड के लिए. कॉन्स्ट्रिक्टेड रिसेसिव है, इसलिए हम दोनों स्मॉल आई यूज करेंगे होमोजाइगस रिसेसिव कॉन्स्ट्रिक्टेड के लिए. Heterozygous dominant for pod color is capital G, small g. Homozygous recessive for pod shape is small I, is crossed with homozygous recessive for pod color. Homozygous recessive for pod color is small g. Heterozygous dominant for pod shape. Heterozygous dominant for pod shape is capital I, small I. सबसे पहले तो आपको इनके गैमेट्स बनाने आने चाहिए. कैपिटल जी स्मॉल आई मीन्स ये दोनों गैमेट इस पेरेंट के लिए जो मैंने यहाँ लिख दिए. स्मॉल जी कैपिटल आई स्मॉल आई ये दोनों गैमेट इस पेरेंट के लिए जो मैंने यहाँ लिख दिए. इनको आपस में क्रॉस किया. होपफुली आपको ये पनेट स्क्वायर बनाना आता हो. कैपिटल जी यहाँ से स्मॉल आई यहाँ से स्मॉल आई यहाँ से स्मॉल जी यहाँ से स्मॉल आई यहाँ से स्मॉल आई यहाँ से स्मॉल जी यहाँ से कैपिटल आई यहाँ से कैपिटल आई यहाँ से स्मॉल जी यहाँ से स्मॉल आई यहाँ से स्मॉल आई यहाँ से. अगर एक भी कैपिटल जी मौजूद है मीन्स कलर इज ग्रीन. दोनों में कैपिटल जी है मीन्स ये दोनों ग्रीन है. यहाँ एक भी कैपिटल जी नहीं है मीन्स येलो. ये दोनों येलो है. एक भी कैपिटल आई होगा तो सीड क्या होगा इन्फ्लेटेड होगा. इन दोनों में कैपिटल आई मौजूद है मीन्स ये दोनों इन्फ्लेटेड है. दोनों स्मॉल आई मीन्स कॉन्स्ट्रिक्टेड. हमसे क्या पूछा गया है ग्रीन इन्फ्लेटेड जो सिर्फ एक है चार में से. दैट्स वाई ऑप्शन ए 25% इज द करेक्ट आंसर. मीन्स हमें सिर्फ 25% ऐसे ऑफस्प्रिंग मिल रहे हैं जो ग्रीन इन्फ्लेटेड है. मीन्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. द गिवन टेबल शोज ब्लड टाइप्स इन अ family members blood type wife AB husband B child X O child Y B. Which of the following inference is correct regarding the given table with respect to genotypes of blood groups of both wife and husband? वाइफ का ब्लड ग्रुप ए बी है मीन्स वाइफ के पास एक अलील ए है और एक अलील बी. हस्बैंड का ब्लड ग्रुप बी है. हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज है. या तो हस्बैंड के पास दोनों कैपिटल बी हो मीन्स दोनों अलील बी हो या एक अलील बी हो और एक अलील आई हो. अगर ये सिनेरियो होता तो हमें नजर आ रहा है ऑफ स्प्रिंग का ब्लड ग्रुप ए बी होना चाहिए या बी होना चाहिए. अगर ये सिनेरियो हो तो ब्लड ग्रुप या तो ए बी होगा या ए होगा या बी होगा. मीन्स ओ हमें दोनों ही केसेस में नजर नहीं आ रहा. मीन्स जो चाइल्ड एक्स है उसके पेरेंट्स वाइफ और हस्बैंड नहीं है. दैट्स वाई जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी दैट इज neither the wife nor the husband are biological parents of child X. Means option D is the correct answer. ऑप्शन ए के अंदर कह रहे हैं वाइफ इज द बायोलॉजिकल मदर ऑफ बोथ चिल्ड्रन और ऑप्शन सी में कह रहे हैं हस्बैंड इज द बायोलॉजिकल फादर ऑफ बोथ चिल्ड्रन. हमने देखा ये करेक्ट नहीं है क्योंकि चाइल्ड एक्स के पेरेंट हस्बैंड वाइफ नहीं है. ऑप्शन बी में कह रहे हैं
हस्बैंड इज ओनली द बायोलॉजिकल फादर ऑफ चाइल्ड एक्स इनकरेक्ट है। गिवन सिनेरियो में हस्बैंड एंड वाइफ आर बायोलॉजिकल पेरेंट ऑफ चाइल्ड वाई, नॉट ऑफ चाइल्ड एक्स। दैट्स वाई ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। In the given food web, a foreign species labeled as X is introduced which feeds on grasshoppers. The possible outcome of the introduction of this species would be that species X को introduce किया गया है which feeds on grasshopper, means grasshopper की तादाद कम हो जाएगी, तो ग्रास का बायोमास क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसीलिए गिवन ऑप्शंस में से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दैट इज द बायोमास ऑफ ग्रास विल इंक्रीज, मींस ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए में कह रहे हैं द बर्ड्स विल हैव लेस ग्रेन्स टू फीड, बिल्कुल गलत है। ग्रेन्स इंक्रीज, ग्रेन्स का जो बायोमास है वो इंक्रीज हो जाएगा, उनके पास ज़्यादा ग्रेन्स होगी। क्यों? क्योंकि ग्रास ऊपर ग्रेन्स और ग्रास दोनों को खाते हैं, अब सिर्फ ग्रेन्स को बर्ड्स खा रहे हैं। Carrots will grow more in number. The population of rabbit will decrease. कैरेट और रैबिट का कोई डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं है ग्रासहॉपर के साथ, इसलिए ऑप्शन बी और डी इनकरेक्ट है। जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दैट इज द बायोमास ऑफ ग्रास विल इंक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज करेक्ट अबाउट पैरासिटिज्म? एज यू नो, parasitism is a type of symbiosis between members of different species in which a smaller partner parasite drives food and shelter from the body of larger partner host and in turn harms it. Parasites are mostly less in number. False. Host is not killed immediately. True. Parasitism is done for food and shelter. True. हमारे तीनों करेक्ट आंसर कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन बी में। दैट्स व्हाई बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द गिवन फूड वेब। द पॉपुलेशन ऑफ फ्रॉग्स इन दिस फूड वेब कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन ऑफ। अगर आप इस फूड वेब को गौर से देखो, फ्रॉग फीड्स ऑन क्रिकेट, तो गिवन ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर क्या होगा? अगर हम क्रिकेट्स की पॉपुलेशन को इंक्रीज कर दें तो फ्रॉग की पॉपुलेशन भी इंक्रीज हो जाएगी। अगर हम आउल्स की पॉपुलेशन को इंक्रीज करेंगे तो फ्रॉग की पॉपुलेशन इंक्रीज नहीं डिक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आउल्स फीड्स ऑन फ्रॉग। माइस और स्नेक का कोई डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं है फ्रॉग के साथ, इसलिए ए बी सी इनकरेक्ट है और डी क्रिकेट्स इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस लीड टू वाटर पोल्यूशन एक्सेप्ट। गिवन ऑप्शंस में से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दैट इज मेकिंग कंपोजिटिंग पाइल्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड स्कार्प्स, जिसका वाटर पोल्यूशन से कोई ताल्लुक नहीं है। बाकी सारे ऑप्शंस रेलेवेंट है, दैट इज फ्लशिंग हार्मफुल केमिकल्स इन द टॉयलेट्स, disposing extra oil from cooking into kitchen sink, using pesticides in water bodies to kill harmful organisms. That's why option C is the correct answer. Next question. The population of a green plant disappears from the ecosystem due to an increased temperature and flooding. In this case, the reason for extinction of green plants is इंक्रीज्ड टेम्परेचर और फ्लडिंग क्या है? एबायोटिक फैक्टर्स है। इसीलिए हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, दैट इज अ चेंज इन द एबायोटिक फैक्टर्स ऑफ द इकोसिस्टम। हमने कैसे पहचाना? इंक्रीज्ड टेम्परेचर और फ्लडिंग, जो क्या है? कीवर्ड्स है और एबायोटिक फैक्टर्स है, मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ पर्टिकुलर स्कूल स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 10 are following the 3R principle of environmental care. As for them, an example of reduce should be to, as you know, reduce means we should use the natural resources less and should not waste them. Therefore, given options में से जो correct answer है वो है option C, that is
Avoid giving presents with excess packaging. Means option C is the correct answer. Which is correct example of reduce? Means option C is the correct answer. Next question. The primit of number that correctly represents the given food chain is food chain, tree, birds, mosquitoes. As you know, primit of numbers is the graphic representation of the number of individuals per unit area at various trophic levels. एक ट्री उसमें बहुत ज़्यादा बर्ड्स और उससे भी ज़्यादा मॉस्किटोज जो ऑप्शन बी करेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है दैट्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन ए सी डी में ट्री से कम है बर्ड्स जिस वजह से ए सी और डी इनकरेक्ट है और ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर एक ट्री पे बहुत सारे बर्ड और उससे भी ज़्यादा मॉस्किटोज मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर Alternate to practical ATP. The given graph depicts the change in the DNA quantity during a cell cycle. The labeled part, which shows the division phase of the cell cycle, is quantity of DNA, length of the cell cycle time. A, B, C इंटरफेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं डी रिप्रेजेंट कर रहा है डिवीजन फेज को दैट्स वाई डी इज द करेक्ट आंसर ए रिप्रेजेंट कर रहा है G1 फेज को बी रिप्रेजेंट कर रहा है एस फेज को और सी रिप्रेजेंट कर रहा है G2 फेज को डी रिप्रेजेंट कर रहा है माइटोटिक फेज एम फेज या डिवीजन फेज को दैट्स वाई डी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन द गिवन इमेज represents photomicrograph of one of the stages of cell division. The stage of cell division identified is हमें दो सेट्स नज़र आ रहे हैं इसलिए हमने आइडेंटिफाई किया गिवन ऑप्शंस में से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी दैट इज एनाफेज मीन्स ऑप्शन बी एनाफेज इज द करेक्ट आंसर क्योंकि हमें दो सेट्स या दो ग्रुप्स नज़र आते हैं क्रोमोसोम्स के नेक्स्ट क्वेश्चन In the given image of a human eye, the labeled part which contains photoreceptors, rods and cones is, as you know, the inner layer is sensory and is called as retina. It contains the photosensitive cells called rods and cones and associated neurons. Inner layer को कौन सा ऑप्शन रिप्रेजेंट कर रहा है ऑप्शन ए दैट्स वाई ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर Next question. An ENT, ear, nose, throat specialist recommends a cochlear implant hearing device to a patient with hearing problem. The given diagram represents the component of the hearing device that has to be implanted into the ear of the patient. Internal magnet, antenna and receiver/stimulator electrode. The surgeon will implant the electrode of this device at the part labeled as cochlear implant हमारे लिए क्या है कीवर्ड हमें आइडेंटिफाई करना है किस लेटर से कोक्लिया को लेबल किया गया सी से लेबल किया गया है दैट्स वाई सी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन अ स्टूडेंट करेक्टली आइडेंटिफाइड ट्यूबर फ्रॉम द फॉलोइंग इमेजेस his/her answer is represented as गिवन ऑप्शंस में से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी एज यू नो स्टेम ट्यूबर्स आर द enlarged portions of an underground stem rhizome. There are aggregations of tiny buds in the form of eyes along the surface of tuber. Each bud develops into shoot that grows upward and also produces roots, potatoes and yams produced by tubers. That's why option D, potato is the correct answer. Next question. The given image represents the process of budding in a yeast cell. In this image, the missing stage X is nucleus yeast cell X, developing bud,
चेन ऑफ बर्ड्स। गिवन ऑप्शंस में से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए। As you know, in case of yeast, a unicellular fungus, a small bud is formed on one side of cell. The nucleus of cell divides and one of the daughter nuclei is passed into the bud. इसीलिए जो करेक्ट स्टेज है, जो मिसिंग स्टेज एक्स है, वो ऑप्शन ए रिप्रेजेंट कर रहा है, मीन्स ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the given diagram of maize seed, the part that stores food is labeled as, given options में से जो correct answer है वो है option A। As you know, in angiosperms, the stored food is derived from the endosperm tissue. This tissue is rich in oil or starch and protein. और ऑप्शन ए रिप्रेजेंट करा एंडोस्पर्म टिश्यू को, दैट्स व्हाई ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑर्थोपेडिक सर्जन हैज रिकमेंडेड एन इम्प्लांट फॉर एन इंजर्ड जॉइंट। डायग्राम 1 represents the individual components of implant while diagram 2 shows the complete implant. The surgeon will fix this implant at the position labeled as, diagram 1 femoral mention है। As you know, the femur is the only bone located within the human thigh. It is both the longest and the strongest bone in the human body, extending from the hip to the knee. The head of the femur joins the pelvis acetabulum to form the hip joint. ये हिस्सा पेक्टोरल गर्डल को शो कर रहा है और ये हिस्सा पेल्विक गर्डल को। फीमर का हेड पेल्विक गर्डल को ज्वाइन करता है, इसलिए ये पिक्चर शॉर्टलिस्ट हो जाती। मीन्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। द सर्जन विल फिक्स दिस इम्प्लांट एट द पोजीशन लेबल्ड एज ए, मीन्स ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a DNA sample contains 15% of adenine nitrogenous base. What would be the percentage of cytosine in this DNA sample? Pairing is very specific in DNA. The nitrogenous base adenine of one nucleotide forms pair with the thymine of opposing nucleotide, while cytosine forms pair with guanine. मीन्स जितने एडेनिन होंगे उतने ही थाइमीन होंगे और जितने साइटोसिन होंगे उतने ही ग्वाइनिन होंगे, क्योंकि साइटोसिन हमेशा ग्वाइनिन के साथ पेयरिंग करता है और एडेनिन थाइमीन के साथ। अगर एडेनिन 15% है तो थाइमीन भी 15% ही होंगे। साइटोसिन हमें नहीं पता, मीन्स ग्वाइनिन भी उतने ही होंगे जो हमें नहीं पता। टोटल 100% होता है। 15 + 15 30, x + x 2x। 30 यहाँ प्लस हो रहा है, इक्वल्स टू के उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा। 100 - 30 70, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल्स टू के उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। अगर हम 70 को डिवाइड करते हैं 2 से तो हमारे पास आंसर आता है 35। इसलिए जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दैट इज 35%। मीन्स साइटोसिन 35% होंगे, मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मेडिकल सर्वे टीम recorded the heights in centimeter of grade 10 students to provide supplements for their proper growth. Their data is represented in the given histogram. After their survey, they concluded that the students below 135 centimeter height needed to consume growth supplements regularly. Histogram, frequency, height in centimeter. According to the given data, how many students are required to consume growth supplements regularly? 135 सेंटीमीटर से बिलो जितने स्टूडेंट्स हैं तो वो कितने, 6 + 3 मीन्स 9। इसलिए जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दैट इज 9, मीन्स सी इज द करेक्ट आंसर।